So, dear students, previously we already completed your first part, first chapter, biodiversity, and their related also questions, objective type questions, and also I told about some physiology. Physiology विषय में कही previous class रे, that is about the human physiology. But simply what is the definition of the physiology? If I consider the human physiology, so physiology is a branch of biology which deals with the study of the different life sustaining processes in the animals. तो animals मानक पाखरे जो different life sustaining process होची ताको हमें physiology कहि परिबा. जदि से animal पाखरे देखा जाउ this is animal physiology, if it is found in the plant then it is known as the plant physiology. Okay, in zoology we will continue the animal physiology, in which type about the human physiology. But before entering to the human physiology, you need to know about some basic concept of the living organism. Firstly, we know what is biodiversity, what are the different animals, plants, microorganisms found in the biodiversity we study, and how we can classify them into the different categories according to their characters also we study, like plant kingdom, like animal kingdom. Okay, and animal kingdom again you classify according to their characters like chordates, non-chordates. In plants, if I consider the plants, then they also divided upon their characteristics, like their flowering plants, non-flowering plants, angiosperms, like that. So just now we have some idea about plants and animal and their classification strategy, but now we are entering to their anatomy and physiology. Okay, तो आमे समानकर anatomy विषय रे जानिबा, then तापर physiology विषय रे जानिबा. So first anatomy, already I told what is the meaning of anatomy. Two term I have told. One is the morphology, and another one is the anatomy. Morphology and anatomy. And what is the meaning of the morphology? That is the study of the external characteristics of a living organism. Then this branch is known as the morphology. आमे जदि external structure विषय पढ़िबा ताको आमे कोन कहिबा morphology, and anatomy कोन रहइबो internal structure. आमे जदि internal structure विषय डिस्कस करिबा ताको आमे कहिबा anatomy. So आमे वर्तमान कोन करिबा, after knowing the detailed classification strategy of the different animals and plants, now we are entering to the their basic thing ba semanଙ୍କର basic characters, like all the living organism made up of small unit, or their structural and functional यूनिट. जदि मु कहिबी गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो स्ट्रक्चरल आउ फंक्शनल यूनिट किए, तो इट्स ए सिंपल आंसर इज ए लिविंग सेल बा जहाँ को हमें कोश बोली कहूचे, बा सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मे बी इट इज प्लांट और मे बी इट इज एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ताले हमें जानिले प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म रो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कार्यकारी एवं गठनकारी एकक के सेल. ओके, तो हमें एई विषय ऑलरेडी कहिचे. now according to the evolution, if I consider the evolution, mu kahithili what is the meaning of evolution, kon kahithili mu je if we study the origin of the life, then this branch is known as the evolution. So if we study the evolution, then आमे जानिबा कोन जानिबा इवोल्यूशन लु जे all the living organism made up of small unit or their fundamental unit known as the cell. तो आमे जानले कोन जे गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाखरे कोन सेल रही था, लिविंग सेल. ओके, लिविंग सेल्स. नाउ if living cells or numbers को हमें देखिबा, if I consider the number of the living cell, then it is divided into two types. One is the unicellular
एकोकोशीय, एनदर वन इज द मल्टीसेलुलार बा बहुकोशीय हैला, जहाँ पाखे गोटे कोष थिबो बा लिविंग सेल्स, जहाँ पाखे गोटे लिविंग सेल थिबो ताको हम यूनिसेलुलार कहबा, जहाँ पाखे मोर देन 1 मोर देन 2 मेनी नंबर्स रो सेल्स लिविंग सेल्स रहिथिबो ताको हम मल्टीसेलुलार कहबे। तो यूनिसेलुलार को हम ऑलरेडी डिवाइड करछे, इफ आई कंसीडर द मोनेरा देन यू फाउंड द डिफरेंट यूनिसेलुलार प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इफ आई कंसीडर द protista then you found the different unicellular eukaryotic type of organism. So one thing is that all the maximum numbers of the living organism made up of the eukaryotic cells and they are which type multicellular type. तो सेमानक पाखरे multicellular type रो तमे cells पाइबो हैला। Then this multicellular type is called when a group of cells, आमे जानिले जे each living organisms मानकर basic unit कोन रहइबो cell बा living cells रहइबो, they are structural and functional unit. Then if a group of cell or a mass of cell having common embryonic origin with their similar type of structure and they work to complete a specific type of a function, then such group of cell or mass of cell is known as the tissue. Again I repeat, so आमे जानिले लिविंग सेल्स है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जदि आमे लिविंग सेल्स रो नेक्स्ट स्टेप को जीवा मल्टीसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रे आमे समान गोटे डेवलपमेंट पाइबा व्हिच इज नोन एज द टिश्यू। तो मध्य पढ़िथिबो 9th 10th इन मैट्रिकुलेशन लेवल यू आल्सो कंप्लीटेड द टिश्यू। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू? ए ग्रुप ऑफ सेल और ए मास ऑफ सेल, मेंचे सेल रही ग्रुप ऑफ सेल और मास ऑफ सेल हैविंग सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, मीन सेमानकर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम रही ऑल्सो सेमानकर स्ट्रक्चर मध्य सेम रही एंड सेमाने गोटे स्पेसिफिक टाइप रो फंक्शन को कंप्लीट करुथिबे, देन सच ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द टिश्यू। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट मल्टीसेलुलर मानकर डेवलपमेंट केमिति होउची, मल्टीसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मानकर सेमानकर मल्टीसेलुलर बा सेल्स मानकर ग्रुप हेक रहिछन जहा को हम टिश्यू बोली कहले, मे बी इट इज एनिमल टिश्यू, मे बी इट इज प्लांट टिश्यू। नाउ सी दिस tissue again complexed. Now this tissue combinedly form organ जहाँ को हम ओडिया रे अंग प्रत्यंग बोली कही था organ. Okay, and these organ or the complex of the organ or many organs work to complete a system or to continue a system, then such system is known as the organ system. Already I told you about this thing, just briefing idea: cell, tissue, organ system, then this organ system you can say organism. Which type of organism? Living organism बा ताको हमें कौन कहूचे इंडिविजुअल बा इंडिविजुअल, जहाँ को तुम मध्य स्पेसीज बोली कहूचे। आम जदि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को देखिबा आम जानी इंडिविजुअल बा स्पेसीज रही है बायोलॉजिकल स्पेसीज। तो यही भाव में अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन आमर आइडिया आसला जे लिविंग सेल बाय द बाय प्रोसेस रे से गोटे मल्टीसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट होती एंड दिस मल्टीसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग द डेवलप्ड organ system. So just linking with the organ system with the physiology. So physiology ताले हमें कौन कहबा? So physiology रो अर्थ कौन रहइबो? That is the different life sustaining processes if found in any living organism, then such branch of science is known as the physiology. So now this physiology is directly linked with the organ system because this organ system is continued to the
life sustaining process like digestion, like respiration, like circulation, like integumentary system, like lymphatic system, like immunological system, whatever you tell about the physiological process that link with the organ system है तो जतरे organ system से गोटे प्रकार प्रोसेस कले जो प्रोसेस रे लिविंग ऑर्गेनिज्म माने सस्टेन होगी रहिले बा जोथि पाई ताको हम लिविंग बोली कहले बा सेमानक बॉडी रे होमियोस्टेसिस मेंटेन होगी रहिला सेतेबेले ताको हम कोन कहले फिजियोलॉजी ब्रांच टाको हम कहले फिजियोलॉजी है एथिरा हम ऑर्गन सिस्टम्स रो फंक्शंस विषय जानिले जोथि पई हम लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस कहूचे एही मानकर लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस पई हम कहूचे दिस ब्रांच इज नोन एज द फिजियोलॉजी बट बिफोर मूव टू द ऑर्गन सिस्टम you need to know about the cell and tissue. These two things is important. If you don't know about the cell, if you don't know about the tissue, how can you link this organ system with cell and tissue? तुम cell एवं tissue सहित केमते link करिवो organ system को so तुमको ए दुटा थिंग प्रथम जानिबा को पड़िवो one is the cell another one is the tissue तो cell part टी तुम देखिवो बॉटनी रे जो लिखाई दिवो structural and functional unit और cell और the fundamental unit सेतरे तुमको describe करा जिवो बट मु तुमको आज किछि कहिबी before entering to the physiological process I will tell about today I will tell about some animal tissue which type of tissue animal tissue आम कि एनिमल टिश्यू विषय जाना तेल सिंपली तुम कनेक्ट कर एनिमल टिश्यू कौ भाई भाव में ऑर्गन कन्वर्ट होती एंड ऑर्गन्स माने ऑर्गन सिस्टम करुँच एंड ऑर्गन सिस्टम लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस क्रिएट करिकी गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म गोटे होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रखुचंदी है तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया ओके सो लेट्स डिस्कस लेट्स स्टार्ट एनिमल टिश्यू कहीं आम एनिमल टिश्यू पढ़ले बिकज तुम जब एनिमल टिश्यू भीतर आइडिया न तुम ऑर्गन सिस्टम बुझीपार ना कहीं कारण सब ऑर्गन को नहीं तैयारी ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन को नहीं तैयारी एंड ऑर्गन टिश्यू को नहीं तैयारी सो लेट्स स्टार्ट let's start animal tissue. It is a very important part, so try to understand, listen very carefully. That is the animal tissue. Animal tissue ताले टिश्यू रो डेफिनेशन तुमको कौन कहली टिश्यू रो डेफिनेशन कौन कहली तुमको ए group of cell a group of cell having common embryonic origin similar structure with similar type of function with similar type of function मन रखिबो तीनटा कथा काकू टिश्यू कहबा गोटे ग्रुप ऑफ सेल मेंचे सेल हेतिबे सेमानकर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन समान हेतिबो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन आमे जानि छे एवरी डेवलप्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेमानकर जेतेबेले डेवलपमेंटल स्टडी हेथाय बा सेमानकर डेवलपमेंटल स्टेज हेथाय सेमानकर गोटे एम्ब्रियोनिक स्टेज थाय जाको आमे कहि थाउ एम्ब्रियोलॉजी आम पढ़ा डिटेल्स जाना जस्ट आई एम गिविंग सम ब्रीफिंग आइडिया अबाउट द एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो बा ओडिया रे आम कही भ्रूण भ्रूण बोली कही था एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो केमिति फॉर्मेशन होता है आफ्टर द मेटिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल आफ्टर द मेटिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेल एंड फीमेल one is the sperm and another one is the ovum from female ovum and from male is the sperm and this sperm and male but this is the male gamete and this female gamete कौन करिवे फर्टिलाइजेशन हबो ओके तो जेते बेले मेल एवं फीमेल गैमेट्स मानकर कंबाइन हबो बा से माने जो प्रोसेस रे कंबाइन करिवे सेही प्रोसेस टा हम कोन कहबा फर्टिलाइजेशन ओके फर्टिलाइजेशन
and this fertilization converted this sperm or this male gamete and female gamete into zygote, and after repetitive division of the cells this zygote is converted into bhruna ba embryo. Okay, hela, then this embryo by the by converted into the new individual. After the time period, after the limited time, it converted into the new individual. Like that, this embryological process but this developmental stage of a living organism found in every type of the complex type of the animals. तो मैं एटा एम्ब्रियोलॉजी पार्ट रे जानिबो. जस्ट मु तो मु जानिया पई एति कहली जे हमर जेते कि टिश्यू रही छि, जेते कि ऑर्गन्स रही छि बा मेनली सब टिश्यू एम्ब्रियो ही सृष्टि. ओके, तो ये एम्ब्रियो मेनली तीनटा रीजन रही था. ओके, वन इज द एक्टोडर्म. एम्ब्रियो कहबी आउ थोड़ी डिटेल्स. एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म हैला. ए तीनटा रीजन रु ही एवरी टिश्यू मानकर ओरिजिन रहिबो. ओके, सेति पई से रखला कोन हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन. एमानकर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम रहिथिबे एंड स्ट्रक्चर एमानकर सिमिलर हेथिबो एवं सेमानकर गोटे फंक्शन मध्य गुटिए टाइप रो हेथिबो. सेते बेले ताको हम कोन कहिबा टिश्यू. ओके, सो लेट्स start what are the types of the tissue. ताले हमें टिश्यू का कहले a group of cell having common embryonic origin, similar structure with similar type of the function, then such mass of cell is known as the tissue. Okay, so now we will categorize the which type of tissue हमें पढ़िबा animal tissue. एनिमल टिश्यू विषय पढ़ा देखा. एनिमल टिश्यू पाखे कौन कौन से टाइप्स रही आम कौ प्रकार एनिमल टिश्यू आम पाइबा है. सो all the complex animal consist of only 4 types of basic tissue. 4 basic types of tissue. 4 प्रकार तुम टिश्यू पाइब जोटा कि इम्पोर्टेंटली तुम मन रख जे व्हाट आर द टाइप्स बा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द टिश्यू वी फाउंड इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एनिमल. मेनली 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यू. एनिमल टिश्यू कैन बी प्राइमरीली डिवाइडेड into the 4 type of tissue. Okay, so animal tissue primarily categorized into 4 basic टाइप्स. ताने एनिमल टिश्यू 4 भाग रे विभक्त करा जायछि बा एनिमल टिश्यू प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स. 4 टाइप्स 4 भाग रे विभक्त करा जायछि. मन रखियो, जस्ट रिमाइंड दिस थिंग व्हाट इज एनिमल टिश्यू एंड व्हाट आर देयर टाइप्स. 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू you found. Okay, so what are the 4 types of tissue? First one is the epithelial tissue. Second one is the connective tissue. Third one is the muscular tissue, and finally last one is the nervous tissue. ओके, जान लो आज गोटे नुआ कथा कौन एनिमल टिश्यू 4 टाइप रो तुम पाइब. वन इज द एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज द मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज द नर्भस टिश्यू. है यही टिश्यू मानकर कॉम्बिनेशन रे ही ऑर्गन सृष्टि. से आम टिश्यू मान विषय पढ़ा without knowing about the tissue we cannot complete the organ as well as their the organ system. Okay, तो सेथि पई आमे एनिमल टिश्यू विषय पढुजे. मन रखिबो को 4टी टाइप रो एनिमल टिश्यू पाइलो. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड nervous tissue. Okay, these 4 types of tissue we found in the animal tissue
कैटेगरी एनिमल टिश्यू कैटेगरी तुम 4 प्रकार टिश्यू पाइब। नाउ आई विल गिव यू सम ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। किसी ब्रीफ आइडिया तुमको देवी एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। लेट्स स्टार्ट विथ द एपिथेलियल टिश्यू। सो आम जानिले जे एनिमल्स मानकर गोटे टिश्यू लेवल थाए जो थे आम कैटेगरी पाइले दैट इज द टाइप्स ऑफ द टिश्यू 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू है। तो मुझे तुमको गोटे टेबुल बन दूसरी मन रख। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कौन प्राइमरी टिश्यू देयर ओरिजिन। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तुम ओरिजिन जानिबा दरकार प्रत्येक टिश्यू प्रत्येक ऑर्गन्स मानकर। ओके देयर ओरिजिन एंड देयर मेन फंक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। प्राइमरी टिश्यू टाइप्स लिखी से ओरिजिन लिखी से मेन फंक्शन लिखी है। तमें यू कैन राइट डाउन सच पॉइंट्स। फास्ट आम कौ टिश्यू स्टार्ट करवा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ओके। सो एपिथेलियल टिश्यू जदि आम ओरिजिन को देखा एमानकर ओरिजिन रही था एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। ये 3टा रीजन ऑफ एम्ब्रियो रु एमानकर ओरिजिन होता है। तो व्हाट इज द ओरिजिन कौ टाइप रो ओरिजिन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है। एमानकर ओरिजिन माने एमानकर भ्रूण रु कौ जगार एमानकर सृष्टि। तो ये 3टा डर्म विषय तुमको जस्ट कहली आउ थे रिमाइंड कर दूची। तो एम्ब्रियो को जदि आम देखा एमानकर 3टी ये भाव में आवरण थी है डर्म माने सेमानकर गठनटा यही टाइप रही। एमानकर 3टा डर्म थी। बाहर को आम कहे एक्टोडर्म, मझीटा को आम कहे मेजोडर्म एंड लास्ट को आम कहे एंडोडर्म है। सेमानकर डर्मिक कंडीशन यही भाव रही एवं यही 3टा डर्म रु सेमानकर ओरिजिन हम बा प्रत्येक इंडिविजुअल तुम जो टिश्यू लेवल को देख प्रत्येक टिश्यू लेवल गोटे ओरिजिनेशन पॉइंट थाए फ्रॉम द एम्ब्रियो। दिस ओरिजिनेशन पॉइंट इज एपिथेलियल टिश्यू कौन कहूँ एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 3टा डर्म एमाने अल्टीमेटली कौन होता ओरिजिन होता है सेमानकर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एमानकर रही था। एंड इम्पोर्टेंटली व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट इज द प्रोटेक्शन, second is the secretion, third is the absorption, fourth is the excretion and fifth is the reproduction. Just main function, one is the protection, second one is the secretion, third one is the absorption, and fourth one is the excretion and fourth one is the reproduction. ओके सेमानकर मेन फंक्शन कहीदेली कौ भाया भाव में प्रोटेक्शन कर सिक्रेशन कर। आई विल ऑल्सो टेल जस्ट आई एम गिविंग ए ब्रीफ आइडिया अबाउट देयर ओरिजिन एंड देयर मेन फंक्शन विथ देयर टाइप्स। ओके फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिन एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेमानकर एक्टोडर्म,
mesoderm as well as endoderm, and their main functions are the protection, secretion, absorption, excretion, reproduction. Protection means सुरक्षा देवा, secretion means किसी क्षरण करिबा, absorption means absorb करिबा बा कोनोसी smallest particles मानंकु बाहर environment रु outer environment रु internal environment को absorb करिबा ताको में ओडिया रे में भी कहि थाउ शोषण प्रक्रिया. Okay, the absorption, then excretion is the रेचन प्रक्रिया. मीन्स कि जो वेस्टेज मटेरियल बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट रो से माने बाहर को एक्सक्रिएट करिवे, एंड रिप्रोडक्शन इज द प्रजनन प्रक्रिया हैला. तो एई प्रकार रो प्रक्रिया एमानकर तमे पाइबो, बट दीज आर द मेन फंक्शंस फाउंड इन द एपिथेलियल टाइप्स ऑफ द टिश्यू. प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन इन द रिप्रोडक्शन. ओके, तो जतरे मु एपिथेलियल टिश्यू डिटेल्स कहबे तमे सेते बेले याकू रेफर करियो, जानि परियो कोन भले भाबरे ए पांच प्रकार रो फंक्शन को से माने कंडक्ट करजोंदी. देन मूव टू द सेकंड वन. Second one is the connective tissue. Second one is the connective tissue. Second one is the connective tissue. Connective tissue. Connective tissue, and their origin only from mesoderm. एमानकर ओरिजिन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन कोठी थिबो मेसोडर्म हैला, मन रखिबो मेसोडर्म. ओके, एंड देयर मेन फंक्शंस आर द अटैचमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट. ओके, अटैचमेंट, सपोर्ट, transport, storage, and also protection. एमती टेबुलर फॉर्म रे तुम नोट रे तुम लिखियो हैला. कनेक्टिव टिश्यू रो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन कोन रहइबो मेसोडर्म. मेसोडर्म कोन जानि परछो कहितली एम्ब्रियो रो मेसोडर्म हैला. मिड डर्म टा कमे कहूचे मेसोडर्म. सेमानकर ओरिजिन मेसोडर्म. एवं एमानकर मेन फंक्शन कोन रहइबो अटैचमेंट. से माने कोनोसी प्रकार रो अटैचमेंट करिवे. ओके, कनेक्टिव टिश्यू रो को माने इंक्लूड होचन मेनली बोन, कार्टिलेज हैला. तो सेई टाइप्स रो टिश्यू ब्लड को हम कोन कहूचे कनेक्टिव टिश्यू. ताले कनेक्टिव टिश्यू रो मेन फंक्शन कोन रहइबो अटैचमेंट रे हेल्प करिवो. सपोर्ट, जदि हम बॉडी रे बोन ही न रहइबो हम बॉडी को सपोर्ट किए दबो, तो सपोर्ट रे हेल्प करजन. ट्रांसपोर्ट, ब्लड वन टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. हम ब्लड जानि जे सब प्रकार रो मेजर मटेरियल्स मानंगु से कोन करथाय ट्रांसपोर्ट करथाय. देन स्टोरेज, आल्सो सम टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दे हेल्प इन द स्टोरिंग एज वेल एज द प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन मध्ये से माने देइथांती हैला. तो एई भले भाबरे एमानकर मेजर फंक्शंस रहिबो कनेक्टिव टिश्यू रो. कनेक्टिव टिश्यू, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन मेसोडर्म, मेन फंक्शन अटैचमेंट, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, प्रोटेक्शन. ओके, बुझि पाइलो. देन मूव टू द थर्ड वन. थर्ड रे कि आसीबो मस्क्युलर टिश्यू. मस्क्युलर टिश्यू. ओके, एंड द origin of the muscular tissue same mesoderm. Okay, their embryonic origin is the mesoderm, and their main functions is the movement of the body and locomotion. Movement of body, body रो movement रे help करिवे, and locomotion. लोकोमोशन हैला. लोकोमोशन अर्थ कौन से चल प्रचल प्रक्रिया में साहय करे. मुवमेंट एमती है आम बॉडी ऑर्गन्स मानकर मुवमेंट होची बा सब प्रकार मुवमेंट आमर होची मस्कुलर टिश्यू पाई. लोकोमोशन कि आम चल प्रचल कर गोटे प्लेस रू आउ गोटे प्लेस दुईटा अलग अलग जिनस है. मुवमेंट ऑफ द बॉडी बा बॉडी मुवमेंट सब ऑर्गन्स मानकर मुवमेंट होची. दिस इज द मुवमेंट ऑफ द बॉडी. एंड लोकोमोशन मीन्स गोटे प्लेस रू आउ गोटे प्लेस को मूव करने को आम कहवा लोकोमोशन, चल प्रचल करने प्रक्रिया है. दिस इज द मस्कुलर टिश्यू. एंड लास्ट वन इज द नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू है
ये है 4 नंबर नर्भस टिश्यूर ओरिजिन रहिबो नर्भस टिश्यूर ओरिजिन इज द एक्टोडर्म origin is the ectoderm and their main function control and coordination of the nerve impulse conduction मन रखिबो हला last one is the nervous tissue embryonic origin is the ectoderm and their function is the control and coordination control and coordination control and coordination by nerve impulse transmission है तो दिस इज द फर्स्ट टाइप्स ऑफ टिश्यू नर्वस टिश्यू देयर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन इज द एक्टोडर्म एंड द मेन फंक्शन इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द नर्वस टिश्यू सो सिंपली खाली जस्ट कहि रखुची व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्वस टिश्यू आमे आवर बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको कही इज द रेस्पॉन्सिवनेस से मैंने रेस्पॉन्स देवे मीन्स आम एनवायरमेंट रे होतुबा एक्सटर्नाल चेंजेस को जेते बेले गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन करि परिबो ताकू रेस्पॉन्स करि परिबो बा सेही प्रकारर एक्सटर्नाल चेंजेस को से जानी परिबो ताकू आमे कहू जे रेस्पॉन्सिवनेस सेही रेस्पॉन्सिवनेस गोटे टिश्यू द्वारा कंडक्ट होता है सेही टिश्यूर ना हैला नर्वस टिश्यू इन मेट्रिकुलेशन लेवल यू नो द अबाउट द नर्वस टिश्यू जहाँ को आम ओडिया रे कहू जे स्नायु संस्थान बा स्नायु टिश्यू है तो यही नर्वस टिश्यू कौन करता कंट्रोल आम बॉडी को कंट्रोल करता है जदि तुम नर्वस सिस्टम काम न कर तुम कौन प्रकार रेस्पॉन्स दे पारिबनी है एंड कोऑर्डिनेट करता है कोऑर्डिनेशन रखी है समन्वयता रक्षा करता है बाय नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन नर्व है न्यूरॉन्स इंपल्स है स्टिमुली को ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी सो दिस इज द मेन फंक्शन ओरिजिन एज वेल एज द टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल टिश्यू ओके सो तुम राइट डाउन कल ये सब चारिटा मेन टिश्यू देयर ओरिजिन एज वेल एज देयर द मेन फंक्शन एबे तुमको मु ब्रीफ करी सेपरेटली चारिटा टिश्यू विषय से टाइप्स रही से कैरेक्टरिस्टिक्स रही से डिटेल्स फंक्शंस रही है तो आम देखा एनिमल टिश्यूर चारिटा कैटेगोरी रो लेट्स स्टार्ट विथ एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलिया ओके एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलिया एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलिया एपिथेलियल टिश्यू है ताले आम देख आज एनिमल टिश्यूर प्रथम टिश्यू विषय जानिबा डिटेल स्टडी जानिबा बा एपिथेलियल टिश्यूर कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रही से देखा केमिति सेमानकर डिटेल्स फंक्शन कौन मु तुमको तार मेन फंक्शन कहीदी कौन जे प्रोटेक्शन करुच्ची सिक्रेशन करुच्ची अब्जॉर्प्शन करुच्ची रिप्रोडक्शन करुच्ची एक्सक्रेशन करुच्ची दीज आर द मेन फंक्शंस बट आम गोटे डिटेल करवा कौन कौन से फंक्शन रही किसी टाइप्स रही कि है तो जमीती मुझे तुमको कही जे आम प्रथम लिखिपर स्टार्टिंग प्रथम करवा जे एम ओरिजिन कौटी ऑलरेडी मुझे तुमको कहीदे जे ओरिजिन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स मैंने कौन मन पकाओ एम्ब्रियो को कही एम्ब्रियो 3टा लेयर जो रही है एक्टोडर्म एंडोडर्म मेजोडर्म रिपीटेडली आई टोल्ड अबाउट दिस 3 लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो है कारण ये 3टी लेयर ही प्रत्येक टिश्यू मानकर ओरिजिन होता है ताहले एमानकर ओरिजिनल पॉइंट कौन बा एपिथेलियल टिश्यूर ओरिजिन कौन इट ओरिजिन्स फ्रॉम द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स इज द एक्टोडर्म मेजोडर्म एज वेल एज द एंडोडर्म ताहले लिखिदबा ए पॉइंट टाकू इट origins
from 3 primary germ layer, 3 primary germ layer is ectoderm, mesoderm and एंडोडर्म है एमानकर ओरिजिन विषय जानीगल से माने ओरिजिन कौन होचंदी देन सेकेंड रे आमे जिबा ए टर्म एपिथेलियम और ताको प्लुराल ले आमे कहूचे एपिथेलिया मन रखिबो एमानकर एपिथेलिया इज द प्लुराल फॉर्म एंड इट्स सिंगुलर फॉर्म इज द एपिथेलियम was introduced by one of the scientists in the year of the 1703 named as the Frederick Roust. Okay, Frederick Roust नामक जने scientist in the year of 1703 coined the term epithelia in plural and in singular is the epithelium. Okay, ताल से मानकर term को किए लिखतिले लिखि दबा the term epithelia in plural, okay, coined by Frederick Roust in the year of 1703 मन रखियो 1703 मसीह फ्रेडरिक रस्ट नामक जने साइंटिस्ट ए टर्म को कौन करथिले कॉइन करथिले हैला देन सेमानकर पोजीशन देखिबा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू को जगह रे तुमे पाइबो What is the position of the epithelium tissue? Epithelium tissue or the epithelial tissue occurs on the mainly body surface. Body surface रे तुम यार position पाइबो, okay? And जदि एमानकर general characteristics को तुम लक्ष्य करिबो बा एमानकर characteristics idea विषय तुम जानिबो जे epithelium tissue रो basic characters कौन रहिछि तो सेमानकर basic characters means semanakar structural organization basic characters means their structural organization and their types tale ame position kon janile epithelial tissue occurs on the body surface and it also covers the body organs and also found in the lines of the body cavity and tube inside the body tane emanakar position tume kouti pailo it is found in body surface तो body surface कोटा skin ताले आम skin को टिश्यू द्वारा तैयारी ही थाए epithelium tissue ताले body surface as well as internally the organ रे तुम्हें पाइबो organ रे पाइबो ट्यूब जति की बॉडी रे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भेसल्स लाइक कैपिलरी लाइक भेन लाइक आर्टेरी लाइक एलिमेंटरी कैनाल जति की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तुम्हें पाइबो सेमानकर सरफेस रे मध्ये तुम्हें सरफेस एंड एज वेल एज द इंटरनल सरफेस हैला सेमानकर पोजीशन मध्ये तुम्हें पाइबो ट्यूब रे एंड आउ कोठी पाइबो मेनली कैविटीज inside the body हैला बुझि पारला वेरी सिंपल inside the body surface as well as internal organ tube cavities inside the body रे ए एरिया रे तुमे पाइबे थले ताको हम कहले पोजीशन को जगह रे हमें पाइबा जानि पाइले पोजीशन एबे जिबा तार हमें बेसिक कैरेक्टर्स कोन कैरेक्टर्स रहिछि what are the major characters of the epithelial tissue then तार हमें देखिबा स्ट्रक्चर विषय रे एंड तार टाइप्स विषय रे कैरेक्टर्स देखिबा
What are the major characters of the epithelial tissue? So cells of the epithelium are closely packed together. This is very very important. से कहले आम सेल्स ऑफ द एपिथेलियम एपिथेलियम इज ए टिश्यू ताने टिश्यू जेहेतु से मेंचे सेल थी ग्रुप ऑफ सेल्स रही ताले एमानकर कौन हम सेल्स आर और सेल्स ऑफ एपिथेलियम इज closely packed, okay, and their intercellular space or matrix is minimum or it may be absent, okay, and लिखि रखुथो खातारे and its intracellular space or matrix is minimum or may be absent, is minimum or may be absent. Now question arises, what is the meaning of the intracellular space of the matrix? Have a look. जदि आम एपिथेलियम टिश्यू को कंसीडर करिबा कौन कही रखिली दे आर क्लोजली पैक्ड जम्मा स्पेस नहीं देखो ना टोटल स्पेस नहीं ओके नो स्पेस ओके तो जो देयर इज द नो स्पेस दिस इज द इंट्रासेलुलर स्पेस सेल भितर फांका स्थान नहीं जदि फांका स्थान था ताको आम मैट्रिक्स बोली कही बा सही एरिया रे जो फ्लूइड रही था ताको आम मैट्रिक्स बोली कही यार नहीं बा जम्मा नहीं यही देख टोटल नहीं देयर इज द एब्सेंस ऑफ द इंट्रासेलुलर स्पेस और मिनिमम टोटल नहीं एब्सेंट ओके दिस इज द इंट्रा हेले भितर हो दिस इज द इंटर सेल मध्य इंट्रा मीन्स भितर तो जस्ट चेंज क्लोजली पैक्ड एंड इट्स इंटरसेलुलर स्पेस or matrix is minimum or may be absent with a major characters. Then move to the next character. Cells may be arranged one or many layer. देखो maybe it's one layer एमती रही थी गुट्टिए layer रे पूरा सीधा बस सेमानकर many layer रही थी दीटा तीनटा लेयर रही थी एंड इम्पोर्टेंटली एमानकर बेस एमाने जो जहाँ उपरे एमानकर गोटे चेयर दरकार सब राजकीय लोक एमाने चेयर दरकार एवं ये चेयरटा को आम कहवा बेसमेंट membrane means all the epithelium tissue maybe it's one line structure or the many layer structure found upon a extracellular membrane or base upon a extracellular membrane is known as the basement membrane. This character is very very important in mainly found in the epithelial tissue. then epithelial tissue कौन कहला से जदि से माने सिंगल लेयर रही थांतु माने गुटे लेयर गुटे लाइनिंग रे रही किंबा से मानकर मेनी लेयर रही था एमती देखो मु काहे के क्लोजली लिखुची एमानकर मैट्रिक्स नहीं हैला इंटरसेलुलर स्पेस नहीं ओके तो एमानकर लेयर जहाँ ऊपर रही थे जहाँ ऊपर माने बसी थे ताको आम कौन कहूचे basement membrane you can write what is this so cells may be arranged in one or more layers and rest upon a extracellular basement membrane okay so लिख लो कौन लिख लो जो the cells of the epithelium one or more layers and rest upon extracellular basement membrane underline this basement membrane देखिए केमिति basement membrane सुपर से माने रेस्ट करिथांती okay this is the second characters thirdly then if we move to the thirdly
इट इज मेड अप ऑफ द म्यूकोपोलिसाकाराइड्स ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स कहली ये बेसमेंट मेम्ब्रेन वन टाइप ऑफ सैकाराइड्स बा पॉलीसैकाराइड द्वारा तैयारी जहाँ को आम कही म्यूकोपोलिसाकाराइड्स एंड adjacent epithelial cells are held together by the desmosomes or tenofibrils or at certain places by tight junction or the gap junction or adhering junction. Okay, then से कौन कहला then this epithelial tissue आम जानिले जेतेले एमानकर बेसमेंट मेम्ब्रेन रही यहाँ को कहे बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, तो से गोटे आर्जासेंट सेल्स रही है. आर्जासेंट सेल्स अर्थ रही लागिक रही सेल्स है. तो सही सेल्स मानकर कौन होता है हेल्ड टुगेदर बाय द डेस्मोजम्स से डेस्मोजम्स द्वारा लागिक रे. ओके, सो दीज आर सम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंटली वन ऑफ द एनदर कैरेक्टर just write down the free margin of the epithelial cells may be microvilli, cilia, flagellated or brosh. ओके, ब्रश बॉर्डर है कि से मानकर रही थो ताने आउटे कैरेक्टर खाली लिखि दियो द मार्जिन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू द मार्जिन ऑफ एपिथेलियल tissue may be microvilli বা microvilli ciliated or flagellated. नाउ क्वेश्चन सर माइक्रोविली कौन सिलिएटेड कौन फ्लाजेलेटेड कौन से कहले एमानकर सरफेस कौन लगी एमानकर इट्स मार्जिन जदि आम एपिथेलियल टिश्यू देखा एमानकर बेसमेंट मेम्ब्रेन रहा यहाँ ये रहा तार एपिथेलियल सेल्स गुड़ा रहा एंड से कौन कौन एमानकर मार्जिन यही उपरे आइदर एमानकर उपरटा एमती माइक्रोविली एमती छोट 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 जो ब्रश रे जमी आउटग्रोथ बाहर था एक्सट्रा माइक्रोविली एमाने सिक्रेशन एमाने आब्जर्शन करें मुवमेंट करें एमानकर विभिन्न फंक्शन अच्छे है. तो मन रख एमानकर बेसिक कैरेक्टर कौन एमानकर आइदर माइक्रोविली थिबो नहले सिलिया और फ्लाजेला थिबो. सिलिया एंड फ्लाजेला कौन दीज आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर. इट इज वेरी स्मॉल एंड इट्स वेरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड इट्स मेन फंक्शन इज द मुवमेंट्स ऑफ द एनी पार्टिकल्स किसी पार्टिकल्स मानकर मुवमेंट रे हेल्प करेंगे एमाने हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ताले एमानकर सरफेसटा कौन कहला माइक्रोविली ciliated or flagellated. Okay, ends it's the epithelial tissue important है जदि तुम कौन प्रकार इंजुरी होची इफ यू इंजुरी फाउंड इन द एपिथेलियल एक्सटर्नाली तुम जब इंजुरी पाउच देखो तुम जब कौन प्रकार मेडिकेशन भी न कर कौन प्रकार मेडिसिन भी न लगे ऑटोमेटिकली इट रिकवर्स केमी ड्यू टू द रीजेनरेशन पावर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू. आम जान एक्सटर्नाली आवर बॉडी सरफेस इज मेड अप ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू एंड इट्स वेरी इंपोर्टेंट फंक्शन इज द इट्स हैविंग द ग्रेटली रीजेनरेशन पावर. तो यू कैन मेक्स अंडर इट्स कैरेक्टर तुम्हें लिखि पारिबो इट हैज ए ग्रेट रीजेनरेशन पावर. रीजेनरेशन अर्थ कौन से सेल्स को मल्टीपल करें बढ़े पारे रीजेनरेट करें सेल डिवीजन तुम पढ़ो जापर माइटोसिस एंड मेयोसिस को प्रोसेस से रीजेनरेशन होता है. ओके, ताने इट हैज ए ग्रेट रीजेनरेशन पावर एंड जेनराली नॉट ट्रांसवर्स बाय द ब्लड वेसल नर्व्स जाना दरकार नहीं. तो इट इज ए ग्रेट रीजेनरेशन पावर. सो दीज आर द मेजर कैरेक्टर्स. आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट देयर टाइप्स, importantly types and their function. Okay, thanks all.